Well, Rahul Gandhi is sitting thousands of kilometers away in the United States of America. But his statements are creating a big political explosion back in India. Rahul Gandhi met with India baiter and Pakistan sympathizer Ilhan Omar, and his controversial remarks with regards to biasness against Sikh in the country have now triggered a big meltdown in the political circles of India. Upping the ante against the Lok Sabha leader of the opposition, Modi mantris and BJP netas are slamming Rahul Gandhi, accusing him of being anti-India and also raising the demand to cancel his parliamentary membership. Rahul Gandhi said the fight of Sikhs' right is over in India and it is very difficult for Sikhs to wear turbans and kara in India. Congress is accusing Delhi BJP leader of openly threatening Rahul Gandhi. They are wanting strict action to be taken against the BJP leader. All this after BJP's Sikh netas hit the streets in the national capital demanding an apology from Rahul Gandhi for his remarks. ये देश में भी वही हरकत रहा, खालिद अंसारी से मिलेंगे देश में, अब बाहर जाएंगे तो इल्हान से मिलेंगे, जो इल्हान उमर भारत के खिलाफ जहर उगलता हो। जितने इनके विदेश के जाते हैं तो भारत के खिलाफ ही बोलते हैं, और इस बार तो टोटल एजेंडा ही था। राहुल गांधी की तो सदस्यता ही समाप्त कर देनी चाहिए। ये भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि एक आतंकवादी के लिए राहुल गांधी जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग रात को अफजल गुरु के लिए 2 बजे दरवाजा खुला था। उस लोकतंत्र को ये गाली दे रहे हैं, तो इन पर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। केवल एक एजेंडा लेकर विदेश जाते हैं, भारत और भारतीयों को बदनाम करना। भारत की भाषाएं हो, महिलाएं हो, संगठन हो, सरकार हो, इन सबको अपमानित करना, कोई कमी नहीं छोड़ते। अब तो अमेरिका में भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी भारत के हैं कि पाकिस्तान के हैं। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? भारत के नेता प्रतिपक्ष गए और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करके आज लोग पूछते हैं कि वो हिंदुस्तान के कि पाकिस्तान के। पिछले 2-3 दिन में उन्होंने कई एक घटनाएं ऐसी की हैं जो ये दिखाता है कि देश तोड़ने की जो एक साजिश है और उस साजिश करता जो बाहर बैठा हुआ है उसके साथ राहुल गांधी के संपर्क है, या उनके साथ उनकी भावनाएं मिलती हैं, या उनके साथ मिलकर वो देश में ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं जिससे कि ये देश खंडित हो। राहुल गांधी जी की ये आदत हो गई है कि वो भारत का अपमान विदेश में जाकर के करते हैं, यहाँ भी करते हैं। कई बार हमने उनको कई बार कहा आप नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की आलोचना करें, स्वागत है, लेकिन मोदी जी की नीतियों की आलोचना करते करते आप देश की आलोचना क्यों कर जाते हो? लेकिन चलो, विदेश जाने पे तो कम से कम आप देश का मान और सम्मान का ध्यान रखें। विदेश जाते हमारे देश को भूलते, देश को बदनाम करते हैं, देश के प्रति सम्मान रखना चाहिए। ये तो कैसा देश प्रेम है, ये कैसी देशभक्ति है, ये कैसा राष्ट्र प्रेम है? मैं तो कहूँगा कि ये विचार जो है ये देश के विरोधी विचार है, और इसलिए पूरी दुनिया, पूरे देश में इनकी निंदा होगी। और आने वाले समय में जिनको आरक्षण मिला है, इस देश की संविधान बरकरार रखने वाले देश की जनता, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले उनके अनुयायी, पूरी तरह जो देशवासी है, उनको सबक सिखाए बिना नहीं रहेंगे। और राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, एक तो भारत को बदनाम करते हैं, दूसरा भारत विरोधी तत्वों को सहयोग करते हैं। राहुल गांधी का वक्तव्य बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इर्रिस्पॉन्सिबल, और वो एक कांग्रेस के मेंबर हैं जो एंटी इंडिया अपने वक्तव्यों के लिए मशहूर हैं। आप उसके साथ भी घूम रहे हैं। आपको अमेरिका में कोई भारत का शुभचिंतक संसद का सदस्य नहीं मिला क्या कांग्रेस का? आज इस बात को उल्टा बयानबाजी करके इसको खराब करने का जो काम कर रहे हैं भाजपा के लोग, क्योंकि वो चाहते हैं कि राहुल जी कोई भी बात कहें, हम उनको पकड़ के उसको खराब कैसा कर सकते हैं वो बात करें। लेकिन लोगों के अंदर ये बात जाननी चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो बात बयान दिया वो बिल्कुल सही बयान दिया। आज कहीं भी आप चले जाइए,
जहाँ पर आप जाते हैं, मेट्रो पर चले जाइए, दूसरी जगह पर अपने ट्रेनों में चले जाइए, तो सिखों को टारगेट किया जाता है, पगड़ी देकर टारगेट किया जाता है, दूसरे लोगों को टोपी देकर टारगेट किया जाता है, और लोगों को दूसरी तरह से टारगेट किया जाता है। तो मैं समझता हूँ अल्पसंख्यकों पर एक अत्याचार हो रहा है। इसी बारे में राहुल गांधी ने कहा कि आज सुरक्षित नहीं है। उनको लग रहा है जिस तरीके से विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स के सामने, स्टूडेंट्स के सामने खुले मंचों पर राहुल गांधी जी प्रश्न ले रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं, तो उनको एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है अपने प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री कभी प्रेस से सवाल जवाब करते ही नहीं, कभी बातचीत करते ही नहीं, खुली बातचीत करते ही नहीं। तो भाजपा राहुल गांधी जी के इस गेस्चर से परेशान है और इसलिए वो एक झूठ का आवरण खड़ा कर रही है। Well, there's a big controversy which is raging way back in India with regards to all the statements that have been made by Rahul Gandhi, who's sitting thousands of kilometers away, visiting United States for 3 days. My colleague Piyush Mishra is now joining me on the story. Piyush, we are seeing how the Bharatiya Janata Party is fully gunning for Rahul Gandhi. They are trying to put him in a box, and they are also saying all the statements that Rahul Gandhi has made over the past 3 days, they are all anti-national. Well, absolutely, Ashwin. This is what we are now hearing from different BJP leaders, where they are now coming out and saying that Rahul Gandhi has now decided to stand with anti-India divisive forces, and that is why he is also getting support from various outfits, be it about getting support from Pannu or from various other organizations internationally. BJP is now trailing guns at Rahul Gandhi, and we will see this to be continued in the coming few days. You would remember that yesterday a massive protest was also taken by BJP-backed Sikh outfit, where they protested in front of Rahul Gandhi's residence and demanded his resignation over the comments which he had made on the Sikh religion. We'll have to wait and watch how the Congress will continue to defend the Congress party as well as the Rahul Gandhi on this statement being made by the leader of opposition. But the BJP will continue to attack Rahul Gandhi for making various statements, be it about RFS or about attacking PM Narendra Modi or about talking about religious discrimination in the country, all of the various issues which he has been raising on the international soil. Thank you, Piyush, for giving us all those details and putting things in perspective. The BJP will continue to target Rahul Gandhi in days to come. In fact, it was a picture of Rahul Gandhi sitting with Ilhan Omar that has led to the Bharatiya Janata Party gunning for him. BJP said Congress leader Rahul Gandhi met with India baiter Ilhan Omar during his 3-day trip to the United States of America. Bharatiya Janata Party has also slammed Rahul after Khalistani terrorist Pannoon has endorsed what Rahul Gandhi said with regards to the Sikh community in India. Rahul Gandhi's US visit continues to be in the eye of the storm. And it's his comments on reservation that triggered a massive political meltdown in India. We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem, because there are many people who come from the upper castes, right, who say, look, what have we done wrong? Day after this declaration in Virginia, the leader of opposition in Lok Sabha issued a clarification at another interaction in Washington, D.C. I don't see it as a Mandal versus Kamandal issue. And what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. But political fireworks are already exploding. Home Minister Amit Shah came out all guns blazing at the Congress MP, saying that by speaking about abolishing reservations in the country, Rahul Gandhi has once again brought the Congress's anti-reservation face to the forefront. Shah also declared that as long as BJP is there, no one can abolish reservation in India.
राहुल गांधी जी की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी देश और विदेश में स्पष्ट तौर पर दिखाती है कि आज भी वो जिम्मेदारी मिलने के बावजूद भी गैर जिम्मेदाराना बयान ही देंगे। राहुल गांधी जब भी विदेश जाएंगे तो भारत का अपमान करेंगे। क्या कह दिया आप देखिए, आरक्षण समाप्त कर देंगे। कभी नहीं होगा, राहुल गांधी जान ले आप। राहुल गांधी यहाँ तो संविधान बचाने की बात करते हैं और वहां जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। कभी भी कांग्रेस ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का और संविधान का सम्मान नहीं किया। ये जो वक्तव्य सामने आया है, इससे इनका असली चेहरा सामने आया। Caste consensus and reservation have been one of the main political issues of the Congress and its allies since the run-up to the 2024 elections. India partners have come out in Rahul Gandhi's support. बीजेपी जो है अफवाह पार्टी है। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी है। ये केवल जनता को झूठ बोल करके भ्रमित करके अपनी राजनीति को सेकने का काम करते हैं। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि वो जातीय जनगणना कराएंगे, आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो तो संविधान विरोधी लोग हैं। At home and abroad, caste and quota continue to be a raging debate. Bureau Report, India Today. Now, leader of the opposition, Rahul Gandhi, has once again targeted Prime Minister Narendra Modi. This time, the target came from the National Press Club in Washington, D.C. Rahul Gandhi has accused the Modi government of mishandling the China situation and also claims Chinese troops have occupied land in Ladakh, and that land is the size of the national capital. His remarks have now triggered a big political showdown. Watch what exactly Rahul Gandhi said in the United States. Do you think under Modi that India has managed the US-China competition well? Well, if you call having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory handling something well, then maybe. We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. Rahul Gandhi fires another salvo at Prime Minister Narendra Modi from American soil. In an interaction at the National Press Club in Washington, D.C., the leader of opposition claimed that Modi government hasn't handled China well. He went on to say the Chinese troops have occupied vast tracts of land in Ladakh. Of weaker sections of lower caste in particular, Dalits. If you call having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory handling something well, then maybe. We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. Rahul Gandhi's remarks drew sharp reaction from Modi government. विदेशों में जाकर के भारत के बारे में बुरा भला कहना, भारत को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं है। मोदी जी आने के बाद हमारा 1 इंच जमीन कोई कब्जा नहीं कर पाया। मैंने विपक्ष के नेताओं को कहा था पिछली बार सदन में कि समय है तो मेरा साथ चलिए। The Congress defended Rahul Gandhi's statement. चीन ने इस देश पर कब्जा के हिस्से पर कब्जा किया है, ये बोलना अपराध है, लेकिन चीन को क्लीन चिट देना अपराध नहीं है। ये कमाल का इनका दोगली नीति है भाजपा की। The leader of opposition had earlier sparked a row with a comment on individual rights in the country, citing the example of Sikhs. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. The only time when Sikhs have felt a certain anxiety or insecurity and faced an existential threat was when statements were made कि बड़ा पेड़ अगर गिरता है तो धरती हिलती है. This is as close a justification to targeting of minority communities as I've ever seen in my life. Incidentally, Rahul's statement was endorsed by designated terrorist Gur Patwant Singh Pannu, who called it a justification of Khalistan demand. The BJP also objected to Rahul Gandhi meeting US lawmaker Ilhan Omar, who is seen as a Pakistan sympathizer.
ऐसी महिला जो भारत की बार बार आलोचना करती है, मुस्लिम ब्रदरहुड की साथ खड़ी दिखती हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखती हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उसके बारे में भी आलोचना करती हैं। उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इन्होंने कभी इससे पहले इल्हान उमर का नाम भी सुना था, अब इल्हान उमर सबको रट गया। अगर इन्हें इतनी ही आपत्ति है तो भाजपा तो यहाँ की सत्तारूढ़ दल है। आज समन करें अमेरिका के राजदूत को, आज चिट्ठी लिखें स्टेट डिपार्टमेंट को और अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। Rahul Gandhi's trip to the US just a few days ahead of Prime Minister Modi's tour to that country has exposed the sharp divide in Indian politics. Bureau Report, India Today. Now, the one name that we have been hearing constantly over the past few days is Ilhan Omar. What is Ilhan Omar's India anti-India stance? We are telling you. In 2022, Ilhan Omar met Pakistani leadership. The same year, Ilhan Omar visited Pakistan-occupied Kashmir, the POK. The same year, Ilhan said Kashmir is not getting enough attention. And in 2019, it was the same Ilhan who called Article 370 a very deep concern. With regards to the statements that she has made over the past 5 to 6 years, everyone believes that she does not care for India and is actually anti-national. In fact, it was the picture of Rahul Gandhi sitting with the same Ilhan Omar that has now led for the Bharatiya Janata Party to be gunning for him. BJP said the Congress leader Rahul Gandhi met India beta Ilhan Omar during his 3-day trip to the United States of America. The BJP has also slammed Rahul Gandhi after Khalistani terrorist Pannu endorsed Rahul Gandhi for his views on the Sikh community. Congress leader and leader of the opposition Rahul Gandhi's trip to the US has sparked a firestorm back home for the third day in a row. Rahul Gandhi met US lawmakers, including Ilhan Omar, during his visit to Washington, D.C. Ilhan Omar, a Somali American known for her anti-India stance and remarks, is the US representative for Minnesota's 5th District. She's known for her frequent anti-India tirades and support of anti-India moves within the US political system. Ilhan Omar had slammed India for the abolition of Article 370 in Jammu and Kashmir and had visited Pakistan-occupied Kashmir as well. She also boycotted Prime Minister Narendra Modi's speech to the US Congress. Ilhan Omar had backed the Canadian probe into allegations of the Indian government's alleged role in the killing of Khalistani separatist terrorist Hardeep Singh Nijjar. The BJP's big guns, including Home Minister Amit Shah, have rained fire on Rahul Gandhi for meeting Ilhan Omar, describing the leader of the opposition as anti-India. It almost seems as if he goes abroad to criticize all Indians and his motherland. I condemn the kind of statements and the people whom he is meeting during his foreign trips. On the one hand, he meets Miss Omar, who is a known anti-India propagandist. The Congress has hit back at the BJP, calling its statement motivated. अब इल्हान उमर सबको रट गया। इल्हान उमर एक समूह में, अलग अलग राजनेताओं के एक समूह में राहुल गांधी से मिली। अगर इन्हें इतनी ही आपत्ति है तो भाजपा तो यहाँ की सत्तारूढ़ दल है। आज समन करें अमेरिका के राजदूत को, आज चिट्ठी लिखें स्टेट डिपार्टमेंट को और अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। Earlier, Rahul Gandhi had sparked controversy with his claim on the Sikh community's struggles in India. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. Now Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannu has supported Rahul's statements, calling them bold and factually grounded. Even Sikhs for Justice, a banned organization, has issued a statement hailing Rahul Gandhi's words. The BJP has warned that Rahul is setting a dangerous narrative. वो जिम्मेदारी मिलने के बावजूद भी गैर जिम्मेदाराना बयान ही देंगे। वो सुर्खियों में बने रहने के लिए अफवाहें फैलाने का, झूठ बोलने का काम करते ही रहेंगे
और राहुल गांधी जी, मेरे साथ कितने सिख भाई बहन खड़े हैं। किसी को पगड़ी पहनने पे कोई रोक नहीं, किसी को गुरुद्वारे जाने पे कोई रोक नहीं। Rahul's visit to the US has triggered controversy for multiple reasons, including slamming the Modi government, meeting Pak sympathizer Ilhan Omar, and now an endorsement by Khalistani terrorist Pannu. With Rahul Gautam in Delhi, Bureau Report, India Today.